Hello students, welcome to my channel Hans Commerce Tutorial for the lectures on commerce, accounts, finance and management. My suggestion to you, before watching the video, please go to the description below my video. You'll find a link there. Take a printout of the problems given in the link and keep it ready before watching the video so that you can be able to understand the problem, the solution and the explanation to get the maximum benefit from the lectures. Thank you. Come on students, now we'll start problem number 22. Now see carefully problem number 22. Draw a less than or give curve for the following data. What is ogive curve? An ogive curve is the curve which is drawn for cumulative frequency distribution. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो उसको ओगिव कर्व कहते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर स्टार्टिंग से ऐड करते जाएंगे तो लेस देन फ्रीक्वेंसी आएगा. अगर टोटल लेकर स्टार्टिंग से माइनस करते जाएंगे तो मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो आई विल डेमोन्स्ट्रेट इन द प्रॉब्लम इटसेल्फ. So there are two types of cumulative frequencies, less than cumulative and more than cumulative. और ये जब less than cumulative और more than cumulative को ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे, that is called ogive. That is called ogive. So this is the first problem on drawing the ogive curve. So draw a less than ogive curve for the following data. Wages are 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. Number of workers are given. So it's a continuous frequency distribution. See here. Less than ogive curve. Wages as it is given in the problem. Number of workers, frequency 5, 10, 15, 25. Now I am calculating the less than cumulative frequency. What is less than cumulative frequency? Adding up from the top. Adding up from the top. So first frequency 5. 5 plus 10. 15, 15 plus 15, 30, 30 plus 10, 40, 40 plus 5, 45. ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करें इसको लेस देन क्यूमुलेटिव कहते हैं. ऊपर से एड अप करते जाओ. फ्रॉम टॉप वी हैव टू एड अप. दैट इज कॉल्ड लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब ग्राफ पेपर पर डालेंगे तो उसको कहते हैं लेस देन ओगिव कर्व. इट इज कॉल्ड लेस देन ओगिव कर्व. नाउ the wages will be taken on the x-axis 10 to 20, 20 to 30, highest wage is 60, minimum wage is 10. So we are going to take 10, 20, 30, 40, 50, 60, highest 60. Now cumulative frequency, we should not consider the frequency, we should consider the cumulative frequency. What is the highest cumulative frequency? 45. So we have to adjust 45 on y-axis. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. So highest 45 है. तो 1 centimeter को 5 units I have taken on y-axis. Now, the upper limit we will take the cumulative. We have two limits in the class interval, lower limit and upper limit. The upper limit will be taken and cumulative frequency will be taken on the ogive curve. What is the upper limit of the first class? 20. What is the cumulative frequency? 5. तो 20 के ऊपर अपर कंट्रोल लिमिट 20 के ऊपर 5 के अगेंस्ट में एक मार्क डाल देंगे. 20 above 20 against 5 put a mark. Then next upper control limit is 30. What is the cumulative frequency? 15. तो 30 के ऊपर 15 के अगेंस्ट में, ये 30 के ऊपर ये 15 के अगेंस्ट में again put a mark. Right? Next, after that 40. What is the value? 40. Upper control limit is 40. What is the CF? 30. तो 40 के ऊपर और 30 के अगेंस्ट में, ये 30 के अगेंस्ट में again put a mark. Right? Next, 50. For 50 the cumulative frequency is 40. ये 50 के ऊपर और 40 के अगेंस्ट में यहां पर एक मार्क डाल दें. Last one for 60. For 60 upper control limit, what is the cumulative? 45. ये 60 के ऊपर और 45 के अगेंस्ट में, ये 45 के अगेंस्ट में put a mark. Now with a free hand, don't use the scale.
don't use the scale. With a free hand, draw a smooth curve. Draw a smooth curve touching all the marked points. Touching all the marked points. जितने मार्किंग करे हैं आप, ये मार्किंग को स्मूथ कर्व से लाइन ड्रॉ करिए. This is called less than ogive curve. Again I repeat, it's very important. Ogive curve means cumulative frequency distribution curve. Two types of ogive curves are there, less than cumulative and more than cumulative. अब current problem में it is specifically asking you to draw less than ogive curve. That's why we have taken less than cumulative frequency distribution. We are adding up from top. अब frequencies को draw नहीं करना. We should not consider the frequency. We should consider only the CF, cumulative frequency, and upper control limit. This point you have to remember. For drawing the less than ogive curve, we need upper control limit and cumulative frequencies. So cumulative frequencies we have to take on y-axis, and wages we are taking on the x-axis, upper control limit. The upper control limit are 20, 30, 40, 50, 60. These are the values we have to take. But the wages we are taking from 10 to 9. Draw all the points, draw the line. This is the less than ogive curve. Now 23rd problem. Problem number 23, draw the ogive curves. It is not saying curve, it is saying curves, means we have to draw both the curves, less than ogive curve and more than ogive curve. And find the value of median for the following. Mid values are given, frequency is given. See here, while calculating the median, we have already discussed that median can be graphically found by drawing the ogive curves. अगर दोनों ogive curves ड्रॉ करेंगे, less than ogive and more than ogive, ये दोनों ogive curves जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस, एंड दिस विल गिव यू मीडियन वैल्यू. तो मीडियन कैन बी असर्टेड बाय ड्रॉइंग बोथ द ogive curves, less than and greater. That's what we are going to do in this problem. Drawing the ogive curves and finding the median from it. Mid values are given in the problem. We have to convert the mid values into class interval. So 5 is the mid value. Next is 15. The difference between two mid values is 10. दो mid values का difference 10 है. अब 10 का half कर देंगे 5. तो we have to subtract 5 to get lower limit. We have to add 5 to get upper limit. तो 5 minus 5 0. 5 plus 5 10. 15 minus 5 10. 15 plus 5 20. 25 minus 5 20, 25 plus 5 30. Like this, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30. We have converted the mid values into class interval. Frequencies are given in the problem. Now we need two frequencies, that is less than frequency and more than frequency. पहले less than frequency मालूम कर लेंगे. First frequency 10 as it is. 10 plus 34, 44, 44 plus 42, 86. 86 plus 76, 162. 162 plus 53, 215. 215 plus 16, 231. 231 plus 9, 240. तो ये जो frequencies ऊपर से add up कर लेते आए हैं, इसको कहते हैं less than frequency values. Now we need more than frequency values. अब more than frequency values को we take the total. What is the total of the frequency? 240. अगर ये पूरे frequencies को add कर देंगे, तो you are definitely going to get 240. तो first 0 to 10 more than cumulative frequency we should take total 240. ये add up करें तो आपको 240 आ रहा है, तो we have to start with 240. तो 240 में से अब first frequency क्या है? 10. तो 240 minus 10 you will get 230. 230 minus 34 you will get 196. 196 minus 42 you will get 154. 154 minus 76 you will get 78. 78 minus 53 you will get 25. 25 minus 16 you will get 9. तो ऊपर से माइनस करते हुए आए तो मोर देन, और ऊपर से एड अप करते आएंगे तो लेस देन. ये डिफरेंस याद रखिए. Once again, most of the students will get confused regarding how to calculate less than frequency and more than frequency. Once again, I'll repeat. Less than frequency के लिए from top we have to add up. First one 10, 10 plus 34, 44, 44 plus 42, 86, 86 plus 76, 162, 162 plus 53, 215, 215 plus 16, 231, 231 plus 9, 240. If you add up the frequency, you must get 240. ये less than हो गया. अब more than cumulative frequency के लिए the total frequency should be taken in the first. Total frequency is 240. 240 we have taken.
Now subtract the corresponding frequency of every class to get the next cumulative. तो 240 में से 10 माइनस कर दो 230, 230 माइनस 34 196, 196 माइनस 42 154, 154 माइनस 76 78, 78 minus 53 25, 25 minus 16 9. That's it. So we have calculated the less than cumulative, more than cumulative. Now these cumulative values we have to draw on the graph paper to give the ogive curves. What is the lowest class interval? 0. What is the highest? 70. So we have taken 10, 20, 0, 10, 20, 30, 40 up to 70. Right? Now, what is the total cumulative frequency? 240. तो हाईएस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 240. देखिए यहां पर भी 240 हाईएस्ट है, यहां पर भी 240 हाईएस्ट. नाउ वी नीड टू एडजस्ट 240 ऑन वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के ऊपर 240 यूनिट्स हमको एडजस्ट करना है. तो व्हाट विल टेक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 यूनिट्स. तो 20, 40, 60, 80 ऐसा करेंगे तो आपको कितना 12 centimeter में you can be able to adjust 240 units. In 12 centimeter you can be able to adjust 240 units. तो 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240. ये हो गया scale. Now we have to draw this less than and more than. Less than cumulative frequency के लिए आप upper control limit लेंगे और more than cumulative frequency के लिए lower limit लेंगे. That point you have to remember. Now, see carefully. First one, we are drawing less than cumulative. So upper control limit is 10 and less than cumulative is 10. तो ये 10 के ऊपर और 10 के अगेंस्ट में, यहाँ y एक्सिस के ऊपर 10 जो आएगा 0 और 20 के बीच में 10 आएगा. तो ये 10 के अगेंस्ट में, ये 10 के ऊपर एक पॉइंट डाल दिए. राइट? रिमेंबर, less than ogive curve will go from left to right upward. Left to right upward, whereas more than cumulative frequency will come down from left to right downward. Left to right downward. तो less than cumulative frequency upward ऊपर जाएगी. तो ये 10 के लिए 10, 20 के लिए 44, ये 20 के ऊपर 44, ये 40 है, ये 44, ये 44 यहाँ पर पॉइंट. Then 30 के लिए 86, ये 30 के ऊपर 86, ये 80 के ऊपर 86 यहां पर पॉइंट. 40 के लिए 162, ये 40 है, यहां पर 162. देन 50 के लिए 215, ये 50 के ऊपर 215. देन 60 के लिए 231, above 60 231. 70 के ऊपर 240, ये 70 है, ये 240. तो ये जो पॉइंट्स डाले हैं, these points, ये ड्रॉ जो कर रहे हैं, ये लेस देन ओगिव कर्व. This is less than ogive curve. Right? It is moving upward from left to right. अब आपको ड्रॉ करना है more than ogive curve. ये more than ogive curve के लिए we take the lower limit. Remember this point. Lower limit. What is the lower limit here? 0. What is the more than cumulative frequency? 240. तो 0 के लिए 240, ये 0 है और ये 240 है, यहां पर एक पॉइंट डाल दिया. Then next is 10. 10 के लिए 230, ये 10 के ऊपर 230 के ऊपर एक पॉइंट. Then 20 के लिए 196, ये 20 है और ये 196. Then 30 के लिए 154, ये 30 के ऊपर 154, यहां पर 154. देन 40 के लिए 78, ये 40 के लिए ये 78, यहां पर 78. देन 50 के लिए 25, ये 50 के ऊपर 25 यहां पर है. देन 60 के लिए 9, ये 60 के ऊपर और 9 के अगेंस्ट में, ये पॉइंट. नाउ स्मूथ कर्व से ये कर्व ड्रॉ कर देंगे. ये कर्व को कहेंगे मोर देन ओगिव कर्व. This is called more than ogive curve. ये कर्व more than ogive curve, ये कर्व less than ogive curve. अब दोनों ogive curve जहां पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वहां से एक वर्टिकल लाइन, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस. ये दोनों कर्व्स यहां पर ज्वाइन हो रहे हैं. यहां से एक स्ट्रेट लाइन
एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रॉ करेंगे और जहां पर एक्स एक्सिस पर मीट होगा लाइन, दैट विल गिव यू द मीडियन. If you accurately draw this graph on the graph paper, definitely you will get a 37. The median you will get is 37 in between 30 and 40. That's it. This is the problem in which by drawing the Ogive curves we have calculated the median. Right? Now see the next problem, 24th problem. From the following data construct Ogive curve and find out the median. Profit in lakhs. Firms, so profit in lakhs 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, already it is a continuous series. Firms frequency. So here exactly similar to the previous problem. Drawing the Ogive curves and finding the median. Profit 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, like that. Frequencies, firms are given as frequencies. जैसा दिया same copy कर दिया. अब less than cumulative frequency. First one 3. 3 plus 8, 11, 11 plus 12, 23, 23 plus 16, 39, 39 plus 11, 50, 50 plus 10, 60, 60 plus 7, 67, 67 plus 2, 69. This is called the less than cumulative. अब more than cumulative मालूम करना है. What is the total of this frequency? 69. ये total करेंगे तो 69 आएगा. So more than cumulative frequency will take 69. First one. ये 69 लेंगे. अब इसमें से concerned frequency को minus करेंगे, we'll get the next frequency. 69 minus 3, you will get 66. 66 minus 8, you will get 58. 58 minus 12, you will get 46. 46 minus 16, 30. 30 minus 11, 19. 19 minus 10, 9. 9 minus 7, 2. That's it. So you have completed calculative part. अब ओगिव कर्व ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ ये दो कॉलम चाहिए, लेस देन क्यूमुलेटिव, मोर देन. व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू हियर? 69. सो व्हाट आई हैव टेकन 1 centimeter is equal to 5 units. तो 5, 10, 15, 20, 25 up to 70 I have taken on y axis. x axis के ऊपर लोएस्ट वैल्यू 0 है, हाईएस्ट वैल्यू 80 है. तो 0, 10, 20, 30, 40 up to 80 I have taken. पहले लेस देन क्यूमुलेटिव ड्रॉ करेंगे. अपर कंट्रोल लिमिट. What is the upper control limit here? 10. And what is the less than cumulative frequency? 3. तो 10 के ऊपर 3 के अगेंस्ट में पुट ए मार्क. उसी तरह 20, 11. तो 20 के ऊपर 11, 11 के अगेंस्ट में एक पॉइंट डाल. 10 के ऊपर 11 यहां पर आएगा, ये पॉइंट डाल दी. नेक्स्ट 30, 23. 30 के ऊपर 23 के अगेंस्ट में पुट ए मार्क. देन 40, 39. 40 के ऊपर 39 फॉर 40 इट इज 39. तो ये 40 के ऊपर 39 के अगेंस्ट में एक पॉइंट यहां पर डाल दी. राइट. देन 50, ये 50 के ऊपर 50 के अगेंस्ट में एक पॉइंट डाल दी. नेक्स्ट 60 के ऊपर ये 60 के अगेंस्ट में पॉइंट. 70, 67, ये 70 के ऊपर 67 यहां पर. देन 80, 69, ये 80 के ऊपर 69 के अगेंस्ट में पॉइंट आती है. नाउ फ्री हैंड से ये कर्व ड्रॉ कर देंगे. दिस अपवर्ड मूविंग कर्व इज कॉल्ड लेस देन ओगिव कर्व. अपवर्ड मूविंग कर्व इज कॉल्ड लेस देन ओगिव कर्व. अब मोर देन ओगिव कर्व, डाउनवर्ड स्लोपिंग. फर्स्ट लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट मोर देन क्यूमुलेटिव. 0 के लिए 69, ये 0 के ऊपर 69 के ऊपर यहां पर एक मार्क. 10, 66, ये 10 के ऊपर 66 के अगेंस्ट में पॉइंट. देन 20, 58, 20 के ऊपर 58 के अगेंस्ट. देन 30, 46, ये 30 के ऊपर 46. देन 40, 30, ये 40 के ऊपर 30 के अगेंस्ट. 30 के अगेंस्ट यहां पर 40, 30. 50, 19, 50 के ऊपर 19 के अगेंस्ट. राइट, 19 के अगेंस्ट. देन 69, 60 के ऊपर 9 के अगेंस्ट. देन 72, ये 70 के ऊपर 2 के अगेंस्ट में पॉइंट. नाउ फ्री हैंड जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स. द कर्व इज स्लोपिंग डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो एक अपवर्ड कर्व ये लेस देन ओगिव कर्व है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग मोर देन ओगिव कर्व.
दोनों कर्व्स जहां पर मीट होंगे वहां पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे ऑन एक्स एक्सिस. दिस परपेंडिकुलर लाइन विल गिव यू द मीडियन. So if you calculate the median, you are going to get again 37. Okay. So these problems, I think it is clear how to draw the less than Ogive curve and more than Ogive curve. So we have completed problem number 24. Come on students, now we'll take up the last and final problem on diagrammatic and graphic presentation. This is problem number 25. This is exactly similar to the previous problem. So draw the two ogives, two ogives, less than ogive and more than ogive. From the following, class intervals are given 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Like that, last one is 35 to 40. And frequencies are given 7, 10, 20, 13, 17, 10, 14, 9. So we are given the class interval and we are given the frequency. And we are required to find out the two ogive curves. So drawing both the ogive curves, class interval given in the problem, frequency is given in the problem. Now we make two columns, one less than cumulative, another more than cumulative. Less than cumulative क्या मतलब starting से add up करते जाएंगे. 7 plus 10, 17, 17 plus 20, 37, 37 plus 13, 50, 50 plus 17, 67, 67 plus 10, 77, 77 plus 14, 91, 91 plus 900. This is called less than cumulative frequency values. Now more than cumulative frequency. अब more than cumulative frequency को subtract करते जाएंगे from top, right? First of all, what is the total of the frequency here? 100. If you add up the total frequency, you are going to get 100. So first more than you should take 100. First frequency 100. अब यहां से 100 में से माइनस करते जाएंगे respective frequencies को. 100 minus 7, you will get 93. 93 minus 10, you will get 83. 83 minus 20, you will get 63. 63 minus 13, you will get 50. 50 minus 17, 33. 33 minus 10, 23. 23 minus 14, you will get 9. That's it. These are the more than cumulative frequency values. अब स्केल जो लेना है ये cumulative frequency का highest value 100 है. तो we take 1 centimeter is equal to 10 units on y-axis. ये frequencies हम y-axis के ऊपर लेंगे. तो y-axis के ऊपर 1 centimeter is equal to 10 units. तो 10, 20, 30, 40 up to 100. और x-axis के ऊपर 0 से लेके हाईएस्ट 40 तक है. तो 0, 10, 20, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 up to 40. तो 1 centimeter 5 units we have taken on x axis. Y axis 1 centimeter 10 units. Now पहले less than ogive. Less than ogive curve will move upward from left to right. Moving upward from left to right. So for drawing the less than ogive curve, we should take the upper limit and less than CF. Upper limit and less than CF. What is upper limit here? 5. What is the CF? 7. तो 5 के ऊपर 7 के अगेंस्ट, ये 5 के ऊपर और 7 के अगेंस्ट में मान. उसी तरह 10, 17, 10 के ऊपर 17 के अगेंस्ट में एक पॉइंट होती है. देन 15, 37, 15 के ऊपर 37 के अगेंस्ट में पॉइंट. 20, 50, 20 के ऊपर 50 के अगेंस्ट में पॉइंट, राइट. 25, 67, ये 25 के ऊपर 67 पॉइंट. देन 30, 77, ये 30 के ऊपर 77. देन 35, 91, ये 35 के ऊपर 91. लास्ट वन 40, 100, 40 के ऊपर 100 के अगेंस्ट में मार्क. By a smooth curve, join all the points. Join all the points by a smooth curve, and this line will give you less than ogive. अब more than ogive curve draw करना है. More than ogive curve will come forward from left to right. It's a downward moving curve from left to right. So we'll take the lower limit. What is the lower limit here? 0. What is the more than CF? 100. तो 0 के ऊपर 100 के अगेंस्ट में यहां पर एक पॉइंट. देन 593,
5 के ऊपर जाइए 93 के अगेंस्ट में पॉइंट, देन 10 83, 10 के ऊपर 83 के अगेंस्ट में यहां पर पॉइंट, देन 15 63, 15 के ऊपर 63 के अगेंस्ट में पॉइंट, देन 20 50, ये 20 के ऊपर 50 के अगेंस्ट में पॉइंट, देन 25 33, 25 के ऊपर 33 के अगेंस्ट में पॉइंट, देन 30 23, ये 30 के ऊपर 23, राइट, देन 35 9, ये 35 के ऊपर 9 पे पॉइंट. नाउ जॉइन ऑल दीज पॉइंट्स बाय अ स्मूथ कर्व, देन यू विल गेट मोर देन ओगिव. तो मोर देन ओगिव डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड लेस देन ओगिव अपवर्ड स्लोपिंग. So in the problem it is simply asking you to draw both the curves, more than and less than. So this is the more than and less than. अगर ये प्रॉब्लम में मीडियन भी कैलकुलेट करो बताता, तो फिर यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे मीटिंग द एक्स एक्सिस, और जो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस पे मिलेगा वो मीटिंग पॉइंट को कहेंगे मीडियन. दैट्स इट. So we have completed all the problems on diagrammatic and graphic presentation. So my suggestion, to get a complete command, first listen the theory. What is the theory regarding graphical and diagrammatic presentation? Have a good command on what are the different types of graphs we have and what are the different types of diagrams we have and how the diagram will be helpful in statistical analysis. All these things, first you watch the theory, you will get some command over the concepts, then you move on to problems. Totally 25 problems I have explained you. So if you coolly watch these videos, then definitely I trust, I hope that you will have a good command on the subject. Enjoy the subject. Don't listen or don't watch the video only for passing the examination. That's a very narrow objective. Have a broader objective. I am watching the video to get my knowledge. Knowledge will be used any time throughout the life, not just to pass the examination. Okay, keep watching. All the best. We'll meet in the next video on the next topic.